Good evening, everyone. Warm welcome to Super Coaching Regulatory Bodies YouTube channel by Testbook. My name is Madhav Sir. I welcome you all in a very important session which we call it as Finance Current Affairs, and today we will be covering the Finance Current Affairs for 20th to 22nd of July. Believe me guys, this session is a must-watch session if you are preparing for any of the regulatory bodies exam, and for that matter this session is important for your bank exams as well. For example, SBI PO, IBPS PO clerk or RRB PO clerk, for all those exams also this session is going to give you a much more clarity while attempting the current affairs all around the session. Chalo. So before we start the discussion, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine, we are good to go, so that we can begin the discussion. And if you haven't liked the session yet, quickly hit the like button. If you haven't shared the session yet, quickly share the session with your friends so that more and more students, they can join us live. So good evening Aniket, Ajay, Arif, Ankit. Good evening Tina, good evening everyone. So let's begin the discussion. First of all guys, as you all know, if you want to download the PDF of this particular session, that will be available on my Telegram channel, and the link of the Telegram channel is now available on your screen. You can scan the code or you can type @Madhav in order to reach out to me on Telegram channel, and on the same channel you will find the PDF of the sessions as well. So let's get started with the first news of the evening, and the first news of the evening is now on your screen. This news is really very important because this news is related to RBI. Recently, RBI has announced penalty on 4 cooperative banks. So whenever this kind of question is discussed with you in a session, don't take it in a format that it won't be asked in the examination. No. In the past, we have witnessed that in the phase 1 examination, RBI has asked many questions since 2016 based on the penalty value which has been charged by RBI. So today I have list of 4 banks on which RBI has charged the penalty. But before I move ahead, recently we have discussed 2 important banks, 2 major banks on which penalty has been charged by RBI. Could you name those 2 banks on which RBI has charged the penalty? RBI has charged the penalty on banks recently, and these penalty values were 4.88 lakh crore rupees and 4.88 lakh rupees, and second penalty value was around 3 lakh rupees. So the penalty was, or the value of penalty was very low, but yes, the penalty has been charged in the recent times. Can you name the banks on which the penalty has been charged recently by RBI? I'm still waiting for your reply. Give me the answer in the comment section. By the time I'll discuss the name of these banks which are on the screen. So Reserve Bank of India has took regulatory action by imposing monetary penalties on 4 cooperative banks, and all these 4 cooperative banks, they are from the same state, that is Gujarat and Maharashtra. So this action is taken by RBI under the section 47 of RBI Act 1934, under section 47, 46 and 56 of Banking Regulation Act 1949. These sections are not important, but RBI can charge penalty on the banks as per Banking Regulation Act 1949. That is true. That means RBI has been given power that if banks are not fulfilling the compliance with respect to RBI norms, then RBI has the power to charge penalty on these banks. But the biggest question is, sir, इतने बड़े-बड़े banks पे जब RBI penalty charge करता भी है, how this is going to be helpful? So in order to answer this particular question, my answer to you all will be, whenever we talk about this particular thought that how these penalties are going to impact, so these penalties, they basically enforce the compliance and they promote better regulatory discipline among the banks. So जब भी कभी किसी बैंक के ऊपर penalty charge होगी, publicly that will be declared that this bank has been charged with a penalty, and once this declaration is done, कहीं ना कहीं उस बैंक की reputation पे impact होगा, and bank will try to improve its reputation in the near future to go. So not only the funds which a bank has to pay is the risk on the bank, but if a bank has been charged with a penalty, it has a risk of reputation risk which may impact
onboarding of new customers, which may even lead to deboarding of already existing customers of the bank. ठीक है जी, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा. अब उसके बाद अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे कौन कौन से बैंक्स हैं, तो हमारे पास 4 बैंक्स हैं. फर्स्ट वन इज मंदवी या मंदावी नागरिक सहकारी बैंक. देन वी हैव सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक. देन वी हैव लक्ष्मी विष्णु सहकारी बैंक. देन वी हैव थाने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक. सो ये 4 बैंक्स हैं जिनके ऊपर पेनल्टी चार्ज हुई है. अगर आप याद कर पाए तो रिमेंबर द पेनल्टी वैल्यू. इफ यू कैन नॉट, इट्स ओके, बिकॉज कोऑपरेटिव बैंक्स की बहुत बड़ी लिस्ट है जिनके ऊपर पेनल्टी चार्ज हुई है. सो इन केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द बैंक्स ऑन विच penalty has been charged. Most importantly, what is the importance of these norms? Sir, it will bring credit discipline, cyber security, customer protection, and ethical lending by the banks if RBI is charging penalties on the matters related to or impacted by these 4 cooperative banks. If I talk about the RBI's proactive supervision over the urban and rural cooperative banks, this can be taken in this vision or in this mode कि ठीक है, RBI is taking or RBI is being proactive, especially with respect to the urban cooperative banks in order to avoid loss in the near future. This initiative has been taken by RBI. ठीक है जी, clear हो गया ये point? If it is clear, just give me yes sir so that we can begin or we can move ahead. So यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बैंक्स के नाम याद रखने हैं, nothing else. But my question is still pending with you all guys. Name the 2 banks on which RBI has recently charged penalty, और penalty का value भी मैंने आपको बताया, that was 4.88 lakhs. Any idea guys? What is the name of the bank on which this penalty value has been charged? And my answer is, sir, recently RBI has charged penalty on HDFC Bank. Penalty value was 4.88 lakh. Along with this, HDFC is one of the most important bank of the country. It is the domestic systematically important bank of the country. So in this particular case, we must remember why this penalty has been charged. So the penalty has been charged because bank has violated foreign investment norms while granting the term loan. So while granting the term loan, bank has violated the foreign investment norms, because of which this penalty has been charged. Moving on to the next point, what does the next point say? So the next point says 2.70 lakh rupees of penalty has been charged on which organizations? And it has been charged on Shri Ram Finance Limited. So on Shri Ram Finance Limited, 2.70 lakh rupees of penalty has been charged related to non-compliance with respect to the digital lending done by Shri Ram Finance. ठीक है जी, तो ये 2 हमने रिसेंटली पढ़े थे, ये आप याद रखिएगा. इसके अलावा आई एम गेटिंग एन आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि सर पीएनबी भी तो है, पीएनबी इज ऑल्सो द पार्ट. तो अगर हम पीएनबी की बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये न्यूज अप्रैल की है. आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक्स विच हैव बीन चार्ज विद द पेनल्टी इन जुलाई. हाँ, पीएनबी के ऊपर भी जुलाई में पेनल्टी चार्ज हुई थी, एंड दैट पेनल्टी विच वॉज चार्ज इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगर आप सर्च कर रहे होंगे तो शायद आपको वो 2024 का डेटा दे रहा होगा. तो अब अगर आप गूगल करके मुझे आंसर्स बता रहे हैं तो दैट इज प्रीटी रॉन्ग. आई वाज वेरी श्योर कि आप ये आंसर्स देंगे, तो मैं पहले से वो डेटा आप लोगों के लिए चेक करके लाया था कि आपका आंसर क्या होगा एंड हाउ आई हैव टू शोकेस दैट आंसर. तो आई गेस नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया. आगे बढ़े दूसरी न्यूज़ की ओर. अच्छा हाँ, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम कवर करेंगे, दैट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. दैट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. ये पॉइंट आपको याद रखना होगा क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आज हम काफ़ी सारी डिटेल में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को कवर करेंगे, सो दैट इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट. Shall I move ahead? Okay. Moving on to the next point. The next news I have for you all is SEBI, Security and Exchange Board of India, as well as National Stock Exchange has launched Samuhik Prativedan Manch. Samuhik Prativedan Manch. As you can see, obviously it's a word in Hindi, but it's a very important point to understand. And what is the importance of this particular point?
See, whenever we talk about stockbrokers, we know that stockbrokers are the mediators because of which we as an investor get a chance to invest in different stocks in the secondary market. Now, these stockbrokers, they are registered on different stock exchanges which are operating in the country, and these stockbrokers, they are asked by SEBI, they are asked by SEBI to present or to come up with a report on regular basis, and that report is ought to be shared by that report is ought to be shared by these the report is ought to be shared by these brokers with the respective stock exchanges. अब ब्रोकर के ऊपर काम बढ़ गया. ब्रोकर के ऊपर काम कैसे बढ़ गया? मान लो एक ब्रोकर है, वो मान लो कि एक ब्रोकर है, वो 3 अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस पे रजिस्टर्ड है, तो उस ब्रोकर को उन तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस पर जाकर अपनी रिपोर्ट को अलग अलग जाकर क्या करना होगा? प्रेजेंट करना होगा. ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बिग डील. ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बिग डील टू प्रेजेंट द रिपोर्ट. इसमें कोई बड़ी बात या मुश्किल बात नहीं है कि आप रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं कर सकते. यू कैन प्रेजेंट द रिपोर्ट, बट इसमें बहुत सारी डुप्लीकेसी है. इट इज कॉस्ट टेकिंग प्रोसेस फॉर द ब्रोकर, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर द ब्रोकर्स. तो इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए सेबी एंड एनएसई दे हैव लॉन्च सामूहिक प्रतिवेदन मंच. इफ आई से इट इज in English, we will be calling it as collective reporting forum. तो जैसे कि अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलरेडी बता दी. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज कि वन ब्रोकर हैज टू शेयर द रिपोर्ट विद ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑन व्हिच दिस ब्रोकर इज registered with, or the broker which has been registered with different stock exchanges. It is responsibility of the broker to present the report to every stock exchange, which is time consuming. And in order to overcome this, now SEBI and NSE, they have launched a platform which we call it as collective reporting forum, or we can call it as Samuhik Prativedan Manch. So this is a platform where broker will present a single report, and once this report is presented on this particular platform, then this report can be accessed by all the stock exchanges on which this broker is registered. So rather than sharing its report individually with all the stock exchanges, now the broker will share its report at one platform, and from that platform it can be accessed by all the different stock exchanges, which will increase the operational efficiency of stock brokers operating in the country. So that is the entire news. अब इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं. It will be very much clear to you. So this is going to be launched from 1st of August 2025. What is the objective? To simplify, centralize and digitalize the compliance reporting mechanism for the stockbrokers. It aims to reduce duplication, manual error, time and cost in regulatory submission. So now brokers registered with multiple exchanges, they are submitting identical compliance report to each exchange separately. The result is repetition of the work, increased compliance cost as well as operational inefficiency. So इस problem को overcome करने के लिए a centralized digital platform has been developed by SEBI in collaboration with NSE, that is National Stock Exchange, which allows the brokers to submit compliance report once, which can be shared across all the relevant stock exchanges, or which can be accessed by all the relevant stock exchanges through a single platform itself. Now it will ensure uniformity as well as transparency. अब तो ये भी होगा कि एक ही रिपोर्ट दी है तो वो रिपोर्ट हर एक स्टॉक एक्सचेंज से सिमिलर होगी. ऐसा तो है नहीं कि अगर आप डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस को इंडिविजुअल रिपोर्ट्स दे रहे हैं, you are not, or you were capable enough to manipulate the reports as per your requirement, which is not true, which is not ethically correct. And if SEBI will catch you, then SEBI will charge penalty also. But there was a possibility. But now this possibility has been resolved, because you will be submitting the report at a single platform, and once you submit the report, that same report will be accessed by all the stock exchanges on which you as a broker registered with. Now, what are the key features? So from phase 1, that is from 1st of August 2025, 40 compliance reports included in the initial launch.
they will be published by the stockbrokers on this single platform only, which will enable summation of these reports via unified interface. Subsequent phases में क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा, बाकी की जो रिपोर्ट्स है दैट विल आल्सो बी सबमिटेड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. सो कुल मिला के बात ये है कि जो रिपोर्ट्स कंप्लायंस रिपोर्ट का मतलब है कि ब्रोकर अपनी एक रिपोर्ट शेयर करता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ कि भैया ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रांजैक्शंस हुई हैं, एंड इन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, इन ईच एंड एवरी ऑपरेशन आई हैव फॉलोड ऑल द कंप्लायंसेस एज सेट बाय सेबी. तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाई जाती है बाय द ब्रोकर. सो ये जो रिपोर्ट थी, इट वाज सबमिटेड टू डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस simultaneously by a same broker. Now in order to avoid this repetition, अब ये सारी की सारी रिपोर्ट एक सिंगल सेंट्रलाइज यूनिट कह लो, सेंट्रलाइज पोर्टल कह लो, वहां पे शेयर होगी और जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है जिन पे ये कंसर्न ब्रोकर रजिस्टर्ड है वो इस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर यहां से फॉरवर्ड भी की जाएंगी उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड भी किया जाएगा ऑटोमेटिकली टू ऑल द रेलिवेंट स्टॉक एक्सचेंजेस. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज सामूहिक प्रतिवेदन मंच. There is a great probability that RBI can ask a question on this, क्योंकि जब भी कभी हम बात करते हैं कोई भी ऐसे इनिशिएटिव की, जिस इनिशिएटिव से मैनुअल ऑपरेशंस ईज आउट हुए हैं, जिस ऑपरेशन से एफिशिएंसी ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्रीज हुई है, दैट हैज ऑलवेज रिमेन वन ऑफ द फेवरेट एरिया ऑफ RBI, जिसकी वजह से आई ऑलवेज से RBI विल आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रवाह directly or indirectly, and I'm expecting that RBI will ask a question on this SEBI's initiative as well. अच्छा, प्रवाह के साथ एक और initiative था which was taken up by which was launched by RBI, because of which RBI has received the recognition on the global level. RBI has received the award as well. Can you name that second portal which has been recognized on the global level, which has been developed internally through the RBI IT department itself? Can you give me the name in the comment section? Otherwise, I'll give you the answer. Now, if I talk about around 990 stockbrokers having membership in multiple stock exchanges, they will experience reduced regulatory burden, benefit from cost efficiency, gain more time for client servicing, and it has a strategic significance because it will align SEBI's broader vision to leverage technology for regulatory compliance, make market more investor friendly, and improve the intermediary compliance. So these are the benefits which are going to be witnessed by the stockbrokers, and overall market operations are going to improve because of Samuhik Prativedan Manch. Clear हो गया? बिल्कुल सर. प्रवाह plus सारथी are the two IT innovations which have been done in RBI, because of which RBI has been recognized on global level as one of the best central bank in terms of digital operations. Moving on to the next news. The next news is very important. The next news is basically a report. Please try to understand this point. The next report is basically a report on GST. So we all know that GST was implemented from 1st of जुलाई 2017, और उसके बाद से लेकर आज तक अगर हम जुलाई में ही बात करें तो it's been 8 years that GST has been implemented. Now, keeping these 8 years in mind, SBI's research wing has presented SBI research report on 8 years of GST, and in this particular report we will be discussing about the states which are performing really very well as per the GST. We will be discussing the data of the states which have recorded GST revenue of more than 1 lakh crore rupees. Then we'll discuss the participation of women in the GST filing, in the GST as well as financial structure. After that, we will be discussing the states which are the lowest contributing states in terms of GST revenue, and then we will be discussing the unperforming and overperforming states with respect to GST revenue, and we'll compare the GST revenue with the state's GDP in order to conclude that whether they are outperforming or they are underperforming. ठीक है जी. Then even I'll discuss कि आज से लेकर पिछले 8 सालों में how GST has evolved, and I will be discussing
only and only the appropriate data which you need to remember, which can be asked directly or indirectly in your examination. अगर directly question नहीं भी पूछा गया, then you can utilize the same data while answering a descriptive question जहां पर GST को कहीं ना कहीं introduce किया गया. Are you ready, guys? I hope you all know very well. GST stands for Goods and Service Tax. It was implemented in the country from 1st of July 2017, and it's been 8 years that GST has been implemented in the country. So since these 8 long years, how GST has evolved, how GST revenue has changed, which all states are the major contributor in the GST revenue, we will be discussing that. First of all, what is the theme of this particular report? So the theme of the report is assessing taxpayer distribution, revenue performance, gender participation, and state-wise trends. If you see the theme gives you the entire answer. अगर आप थीम को ध्यान से देखें तो थीम आपको पूरा आंसर दे रही है कि इस रिपोर्ट में, इस पूरे डिस्कशन में हम क्या बात करेंगे. We'll assess the taxpayer distribution. We will discuss the revenue performance, how revenue has changed over the period of time. Then we'll discuss the gender participation in GST filing, and then in the end we'll discuss the state-wise trend, that what is the value of GST collection from different states. So let's quickly decode the entire discussion. First of all, I'll start my discussion with top 5 states. So GST taxpayer share. So together, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, it accounts for 50% of all GST registration in India. So अगर GST registration India में हो रहे हैं 100, if we are getting 100 GST registrations in India, या फिर हम ये कहें कि इंडिया में अगर 100 एक्टिव GST registrations है तो उसमें से around 50% of GST registrations are in states like उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. मैंने इनको लिखा भी उसी फ्लो में ही है जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव registrations are in उत्तर प्रदेश, then in महाराष्ट्र, then in गुजरात, then in तमिलनाडु and then in कर्नाटका. लेकिन सिर्फ और सिर्फ GST registration ही नहीं. If I talk about the GST revenue, these 5 states contribute 41% of total GST revenue. तो जो total GST revenue collect हो रहा है in the entire country, उस total GST revenue का 41% share is coming alone from these 5 states, that is Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. So this is the percentage of active GST taxpayers. But if you talk about the overall contribution, so the overall contribution in terms of GST revenue done by these states is 41%. Done by these states is 41%. India mein we have 6 states. India mein we have 6 states which have reported more than 1 lakh crore rupees of GST revenue. So states with gross GST revenue of more than 1 lakh crores. So now I will say there are 6 states which have crossed this milestone, which have recorded GST collection of more than 1 lakh crore rupees. I'm not giving you the names of these states because that is not important. It will unnecessarily increase the data which is not required. Moving on to the next point. The next point is very important. That is women participation in GST and finance. 20% of taxpayers have at least one woman listed in their GST registration. So 20% जो taxpayers हैं उनमें से total में जो 20% taxpayers हैं, they have women registered taxpayer. Registered taxpayer का मतलब क्या? What they are trying to say? It's trying to say that let's suppose I'm running a business with my sister. So I'm male, my sister is obviously female. So we both have formed a firm. And now this firm is paying the GST. This firm is paying the GST. So this firm which is paying the GST, it is the firm with at least one woman listed. So it is what? So it is a taxpayer. This is a tax paying firm which have at least one woman listed. So in this firm which I'm talking about, we have one woman listed, and these kind of taxpayers are 20% out of the total. And if you talk about all women
businesses, then all women businesses percentage is 14% of registrations are all female businesses. In broader financial indicator, women hold 15% of all income tax filings, and women account for 40% of total bank deposit, reflecting rising financial inclusion and empowerment. तो ये चारों का चारों point बहुत important है. I'll explain these points again to you. Please pay attention. What I'm trying to say, sir, out of total taxpayers, 20% of total taxpayers are entities with women as one of the owner, है ना? As women, one of the owner. I'm not saying only women is the owner, as one of the owner. And 14% of total registered organizations, they are all women businesses. तो अगर आपके पास 100 business register हुए on the GST network, out of them 14% are total 100% women owned businesses. Next we have 15% of all income tax filing is done by women, as well as 40% of total bank deposit is on the name of women, which obviously reflects financial inclusion. तो ये 4 points बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आप इसको यूज कर पाएंगे और बहुत जगह इन पॉइंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट आप आंसर कीजिए, वरना ये जो पॉइंट है इट विल हेल्प यू इन ईएसआई while writing a answer related to gender issues. It will also help you while writing an answer in finance related to financial inclusion, related to gender gap in the financial or digital financial system. So in that particular scenario, this data is going to be really very important. Got it, guys? Got it? Moving on to the next point. So the next point is low contributing states. If I talk about the low contributing states, GST registration is less than 1.4%. So if I talk about the GST registration, so GST registration is less than 1.4%. So states relatively low participating states include which all states? So low participating states include Uttarakhand, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh. If you can see, Himalayan states. If you can see, these are the Himalayan states. Then, if I talk about underperformed states, that means GST revenue in comparison to gross state domestic product is low. We call them as underperformed states. So underperforming in GST compared to GDP share, these states, they contribute less to GST relative to their economic output. That means their GDP is good, their contribution to India's GDP is good, but their contribution to India's total GST revenue is pretty low. It includes Tamil Nadu, Telangana, Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka. The reason is, so GST is a consumer tax. GST is paid in the consumption state, not in the manufacturing state. And if you can see, Telangana, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, these are the manufacturing states, especially if I take it as in a context of technology. So it is a manufacturing state in terms of technology, and as well as it is a manufacturing state in terms of services which are provided. Because of all these reasons, they are majorly producing states rather than consuming states, and GST is calculated as per the consumption because it is a consumption based tax. As you can see, Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat, they are on the top because of their population. High population means high consumption means high GST payment, and high GST payment means your contribution in terms of GST in comparison to the total GST revenue is pretty high because of your undoubtedly population. Is this point clear, guys? If it is clear, just give me yes, sir. Aman, in the starting of this particular session, I have shared the link of my Telegram channel. You can join my Telegram channel, and from there you can download the PDF. For that matter,
Since December 2024, all the PDFs of these finance current affairs are available. तो जितना आपको चाहिए आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. They all are available. ठीक है, तो आप स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन में जाएं. In first for 3-4 minutes, you will find the QR code on the screen. Scan it, join it, and download the PDF. Moving on to the next news. Moving on to the next point. So rising GST collection in last 5 years. So growth is approximately 2x in last 5 years. Average monthly collection is now 2 lakh crore rupees. Average monthly collection is now 2 lakh crore rupees. If I talk about the financial year collection in 2020-21, GST collection was 11.4 lakh crores. So I won't say this is a good comparison because this is COVID year. Consumption was all-time low, so I will not consider it as a good comparison. But what they want to show is they want to show you that it has almost doubled in last 5 years. तो 2020-21 से लेकर 2024-25 में ये जो GST collection it has doubled from 11.4 lakh crore to 22.1 lakh crore for yearly basis. तो यहाँ पे एक और point है, SBI EcoRap report present हुई थी in May 2025 which has estimated India's GDP growth rate at 7.4% for the fourth quarter of the financial year. The major driver 12.7% increase in indirect taxes. तो 12.7% increase already discussed था इस report में in the indirect taxes, and now in this particular report it has been highlighted all the aspects related to the GST collection. All the aspects related to the GST collection. तो I guess this is the conclusion which you need to go through with. एक बार conclusion पढ़ लेना, everything will be clear. ठीक है जी, समझ आ गया. मैंने वही डेटा वही चीजें इंक्लूड की हैं जो इंपॉर्टेंट है. कोई भी इररिलेवेंट चीज को मैंने इंक्लूड नहीं किया जिससे आपको ये लगे कि बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है चीजों को पढ़ना. स्टिल इफ यू वांट मी तो मैं बताता हूं कौन सी चीज आप इग्नोर कर सकते हैं इस डिस्कशन में. इफ यू वांट यू कैन इग्नोर दिस पार्ट. प्रोबेबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए, बट स्टिल इफ यू वांट मी टू आस्क यू कैन इग्नोर फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट. अगर आपको लगे काफी ज्यादा हो रहा है, आप उसे याद नहीं कर पा रहे, तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हैं. बाकी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ पॉइंट है दैट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज थर्ड पॉइंट विच वाज रिलेटेड टू द डेटा, विच वाज डेटा रिलेटेड टू वुमेन. ठीक है जी, क्लियर हो गया. शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज? इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर so that we can move on to the next news. Give me yes sir. अब recently क्या हुआ, एक प्रॉब्लम है आपके लिए भी मेरे लिए भी. वो प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैबिनेट मिनिस्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निर्मला सीतारमण जी. सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, व्हाट इज हिज नेम? What is his name? MOS, Ministry of Finance. What is his name? Anyone can give me the answer. Nahi? I'm still waiting. What is his name? पंकज चौधरी. जिनको नहीं पता मैं बता दूं, द नेम इज पंकज चौधरी. तो रिसेंटली किसी ने एक क्वेश्चन पूछा राज्यसभा में, और राज्यसभा में क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप लोग काफी समय से कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे आर डूइंग वेल, यू आर सेइंग दैट योर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स दे आर डूइंग वेल. प्लीज शेयर द डेटा with respect to gross NPAs of not only public sector banks but also for the scheduled commercial banks. Now you must be wondering, sir, we have already covered this data in the annual report of RBI. Then we have even discussed this data in the financial stability report of RBI. अब इस पे एक और डेटा हमारे पास आ गया. ऑब्वियसली डेटा इज गोइंग टू बी सेम ओनली, डेटा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अब आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस डेटा वाज इन न्यूज. सो द डेटा इज राज्यसभा में क्वेश्चन किया गया, हाउ बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया इज परफॉर्मिंग, especially with regards to NPA. So the answer
in writing. The answer has been given by Union Minister of Finance. I will be discussing that answer with you, और उस answer में जो important facts हैं, datas हैं, that I will be discussing, which you need to remember. सबसे पहला headline figure जो है, that is gross NPA of public sector bank. I hope सब जानते हैं. Public sector bank means government owned banks. So we have State Bank of India, 11 nationalized banks. So the total number of public sector banks are 12. So gross NPA of public sector banks has fell down from 6.16 lakh crores in the financial year 2020-21, which was 9.11% of the total advances, to a value of 2.83 lakh crore rupees, which is only 2.58% as per the provisional data presented by RBI. ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें याद रखना है. दूसरा पॉइंट, ओवरऑल ग्रॉस एनपीए ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स. इसमें कौन कौन आ गए सर? इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो आए, प्लस इसमें आ गए प्राइवेट बैंक्स. इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन बैंक्स एज वेल एज इट इंक्लूड्स द आरआरबीज. ठीक, सो टोटल एनपीए वॉज 10,36,000 crore rupees in month of March 2018, which has now reduced to only 4.45 lakh crore rupees as of December 2024. As of December 2024, again, which is a very important data which you need to remember. Direct अगर question इस पे आएगा, so you have to answer this question for sure. ठीक है जी, तो यहाँ तक I guess ये दोनों डेटा जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, they are crystal clear to you. इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी. If you have any doubt, you may ask please. Otherwise, I'll move on to the next point. अगला जो हमारे पास point है, that point is again really very important. And what does this point says? So the next point which we have on our screen, just give me a second. The next point which we have on our screen is डिक्लाइन इन फ्रेश एनपीए. व्हाट इज डिक्लाइन इन फ्रेश एनपीए? फ्रेश एनपीए का मतलब है कि आज जो आपने लोन दिया, आज अगर आपने 100 रुपए का लोन दिया तो इस लोन में से कितना लोन अमाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस फ्रेश एनपीए हैज डिक्रीज टू 1%, विच वॉज अर्लियर 8.35%. मतलब अगर पहले बैंक 100 रुपए का लोन दे रहा था तो 100 रुपए के लोन में से बैंक का 8 रुपए, 8 rupees 35 पैसा, they were going in NPA, but now out of new loan of 100 rupees, only 1 rupee or even below 1 rupee is turning into NPA. Now the question is, so what are the reasons due to which gross NPA has sharply fallen down? तो ये रिटर्न में आंसर दिया पंकज चौधरी जी ने. उन्होंने कहा कि सर 5 रीजन है which I will be explaining you in much detail. पहला रीजन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. दूसरा रीजन है सारफेसी एक्ट एज वेल एज RDB Act. Then we have DRT, threshold has increased, specialized asset recovery verticals were set up by the banks, and deployment of business correspondents by the banks. So I will be discussing all of them one by one. The first one is Insolvency and Bankruptcy Code 2016. देखो 2016 से पहले इंडिया में इंसॉल्वेंसी केसेस को हैंडल करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं था. अब कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था तो उससे क्या हो रहा था सर? उससे ये हो रहा था कि इंसॉल्वेंसी केसेस जो इंडिया में थे, जो आपके इकोनॉमी में थे, देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर दोज केसेस. देयर वाज नो वन to come up with a statement that whether the recovery or the process of insolvency which is being run, it is done in a proper manner. There was no, I would say, eagle eye which was responsible to look after different insolvency cases which were going on in the country. So in order to overcome all these problems which we call as problem of insolvency resolution, problem of insolvency timeline, problem of insolvency eagle eye, so इन तीनों प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 वाज इंट्रोड्यूस्ड और इसी के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वाज आल्सो सेट अप. तो ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, दिस इज द फाइनेंशियल this is the authority which is responsible to look after all the insolvency cases in the country. So IBC allow promoters to be removed from defaulting companies. तो जो भी कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है उसके प्रोमोटर को हटा दिया जाता है.
willful defaulters, they are not allowed to get into the process of bidding again. As of December 2024, लगभग 3200 डिस्ट्रेस्ड कंपनीज को रेस्क्यू किया गया अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ, जिसमें से 1119 केसेस को रिजॉल्व किया गया एंड टोटल रिकवर्ड अमाउंट वाज 3.6 लाख करोड़ रुपीस। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए, recently it has been witnessed that India's gross NPA is all-time low. What are the reasons which has led to the fallen or sharp fallen gross NPAs? So this would be the first reason in your descriptive answer writing. Second reason will be your SARFAESI Act. How many of you know the full form of SARFAESI Act? SARFAESI Act stands for securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest. अब जिन्होंने आज तक सारफेसी एक्ट के बारे में नहीं सुना, मैं उन्हें बता दूं, थोड़ी सी मोटी मोटी बात करूंगा, ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। जब मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं तो आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आई गारंटी यू द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी फाइनेंस कॉन्सेप्ट टिल डेट, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने आज तक कभी समझा नहीं होगा, कहीं अवेलेबल भी नहीं होगा, यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपने बैंक से लोन लिया, पुराने दिनों की बात करते हैं, जब आप बैंक से लोन लेते थे और बैंक का लोन आप वापस नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद क्या होगा सर, आपका लोन एनपीए डिक्लेयर होगा। एनपीए डिक्लेयर होने के बाद बैंक विल टेक ओवर द पोजेशन ऑन योर लैंड। तो जो आपने लैंड गिरवी रखा था, मॉर्टगेज किया था, नाउ बैंक इज इन अ पोजीशन टू टेक द पोजेशन, एंड वंस द पोजेशन इज टेकन बाय द बैंक, इट विल बी सोल्ड आउट थ्रू ऑक्शन। बट एज अ बैंक, इफ यू वांट टू टेक अ पोजेशन ऑफ अ immovable asset, in that particular case bank reaches to the judiciary. Once bank receive a judicial approval, then only possession can be taken, and once the possession is taken, then only auction can be done of the given land, and then only bank will be able to recover its loan amount which has turned into NPA. तो हम सब जानते हैं what is the current situation of our judicial system. It's pretty overburdened, and if it is overburdened, it is time consuming. 5-5, 7-7 साल लग जाते थे, जुडिशियल लेवल पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अब जुडिशियल लेवल पे जब तक पोजेशन लेने की परमिशन मिलती, तब तक काफी लेट हो जाता, और बैंक के जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि यू हैव गिवन प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो मिला नहीं, लोन तो आपने एनपीए डिक्लेयर कर दिया, बट स्टिल यू आर कंप्यूटिंग इंटरेस्ट, यू आर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट जो आपको उस प्रिंसिपल पर मिलना चाहिए था। अब वो अमाउंट इतनी ज्यादा हो जाती थी कि एंड ऑफ द डे बैंक हैज टू डिक्लेयर दैट लोन एज लॉस असेट। नाउ इन ऑर्डर टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रिकवरी, Government of India introduced SARFAESI Act, in which Government of India said SARFAESI Act will be valid only and only for secured loan. Sir, obviously this makes sense. Why it makes sense? Because अगर आपको प्रोसेस ऑफ रिकवरी को फास्ट करना, तो रिकवरी विल बी पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन के केस में तो रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि कोई एसेट ही नहीं है जिसको बेचकर रिकवर किया जाए। और उसमें भी कंडीशन रखेगी कि रिकवरी या सार्फेसी एक्ट तभी वैलिड होगा जब आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट या तो 1 लाख से ज्यादा होगी, या फिर इट विल बी ग्रेटर देन 80% ऑफ द टोटल प्रिंसिपल। जब आपका लोन सिक्योर्ड लोन है, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 1 लाख से ज्यादा या 80% ऑफ प्रिंसिपल से ज्यादा, तब जाकर सार्फेसी एक्ट इंप्लीमेंट होगा। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है कि जो बैंक है, बैंक कैन कन्वर्ट इट्स लोन इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब बैंक क्या कर सकता है, बैंक अपने लोन को मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकता है। इफ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डू यू रिमेंबर? तो बैंक विल कन्वर्ट इट सिक्योरिटी एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, और बैंक विल कन्वर्ट इट सिक्योरिटी इनटू अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट, और उसे मार्केट में इशू करके पब्लिक से पैसा रिकवर कर सकता है। या फिर ये हो सकता है कि बैंक अपने लोन अमाउंट को कन्वर्ट कर ले इनटू इक्विटी, और उस इक्विटी शेयर्स को मार्केट में बेचकर अपना पैसा रिकवर कर ले। दिस इज अगेन सिक्योरिटाइजेशन व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ असेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज। वी कॉल इट एज ASC. Second is reconstruction company, which means banks are allowed to sell their NPAs
directly to the asset reconstruction companies and the process of recovery will be performed by the asset reconstruction company. बैंक को क्या फायदा हुआ? बैंक ने अपनी एनपीए आज बेची, एनपीए बेचने के बाद बैंक को पैसा आज मिल गया, बैंक ने उस पैसे को यूज करके फर्दर लोन पे दिया और प्रॉफिट कमाना शुरू किया, रादर देन इन्वेस्टिंग इट्स एनर्जी, मनी एंड टाइम इन रिकवरिंग द लोन विच हैज टर्न्ड इनटू एनपीए. एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहता है कि अब जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट हैज बीन एबॉलिश्ड. बैंक के पास पावर है कि बैंक कैन इशू अ नोटिस ऑफ 60 days और उन 60 days के नोटिस में बैंक कहेगा कस्टमर को कि आप आइए अपने ये एनपीए वाले इशू को रिजॉल्व कर लीजिए. अगर आप नहीं आते तो बैंक हैज अ पावर टू टेक द पोजेशन एंड स्टार्ट द रिकवरी. और अगर पोजेशन लेने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो अब सीधा जुडिशरी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि प्लीज प्लीज हमारी हेल्प कर दो, प्लीज प्लीज हमारे साथ पुलिस भेज दो, ऐसा नहीं. अब उसके लिए यू हैव लोक अदालत, उसके लिए यू हैव डीआरटी इफ योर लोन वैल्यू इज below 20 lakhs, and otherwise you have the judicial system which is available. So in this case, Lok Adalat, DRT or DRAT is a new, I would say, platform which has been offered under this particular act which will help the banks to speed up the process of recovery. अब ये वाला वेट खत्म हो गया. अब जिस दिन आपका लोन एनपीए हुआ, बैंक भले अगले दिन आपको नोटिस दे, नोटिस के पूरे होने के बाद बैंक आपकी असेट के ऊपर रिकवरी के लिए पोजेशन ले सकता है. सो दिस इज सारफेसी एक्ट. तो सारफेसी एक्ट की वजह से स्पीड अप हुआ प्रोसेस ऑफ रिकवरी, एनहांस हुआ लेंडर प्रोटेक्शन. लेंडर मतलब बैंक. डीआरटी थ्रेशोल्ड, सो फाइनेंशियल लिमिट फॉर डीआरटी केसेस पहले 10 लाख थी, अब उन्हें बढ़ाकर 20 लाख कर दिया, जिससे फास्टर डिस्पोजल हो रहा है, बेटर बैंक रिकवरी हो रही है. डीआरटी मींस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. दीज आर द स्पेशल tribunals, or I would say these are the special, how we can say, they are not 100% courts. They are not 100% courts. We can say that these are the institutes which are set up with a special purpose to resolve only and only cases related to NPA. To resolve only and only cases related to NPA, and even they handle the cases related to bankruptcy against an individual or a firm. But if there is a bankruptcy or insolvency case against a company or LLP, then it is taken up by NCLT. ठीक है जी, National Company Law Tribunal. Now coming to the next point, the next and the last point is operational improvement as per the statement given. Dedicated NPA monitoring team has been set up by the banks, which are, these are the specialized asset verticals and branches which are focusing on monitoring and faster resolution of NPA. Then asset valuation norms, mandatory practices, board approved valuation policy. Valuation must be conducted by independent valuers, and if a loan value is greater than 2 crore or 50 crores, then minimum 2 valuation reports are required. मतलब आप लोन लेने गए, आपने कहा मेरी एसेट की वैल्यू 100 करोड़ है, बैंक कहेगा हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम खुद चेक करेंगे. अब बैंक उसे खुद चेक नहीं करेगा, बैंक उसे इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यूएट कराएगा, और एक बार नहीं 2 बार कराएगा. अगर लोन वैल्यू 50 करोड़ से ज्यादा है, when bank is double sure, then only bank will provide you the loan. Next is feet on street model. Feet on street model का मतलब सड़क पर चल पड़े. कौन चल पड़े? बैंकर्स. मतलब बैंक ने टाई अप किया with the business correspondents, and these business correspondents, they are acting as a very important agent of the banks in order to decrease the loans to be turning into NPA, as well as debt recovery में भी they are working or they are performing a good role. अब हो गया ना, मान लो कि एक गांव में एक ग्रोसरी स्टोर के साथ बैंक ने टाई अप किया, दैट इज द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक, और ग्रोसरी स्टोर वाला उस गांव का, उस विलेज का एक बड़ा आदमी है, सब उसे जानते हैं, तो वो कहेगा, प्यार से समझाएगा कि भैया बैंक का पैसा वापस कर दो, कल को फ्यूचर में कभी बैंक से लोन नहीं मिलेगा, आज वापस कर दो, कल दोबारा ले लेना. तो ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं जो एनपीए है या एनपीए परसेंटेज है, इट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ एनपीए, then also you can answer you can write the same answer. Or if a question is asked as it is written on the screen, discuss the decline in gross NPAs in discuss the decline in or sharp decline in gross NPAs of scheduled commercial banks, then also you can use the same data, the same content to answer the question. Is this point clear, everyone? If it is clear, give me yes sir, so that I can move ahead. Just give me yes sir, so that I can move ahead quickly. मजा आया? मजा आया? If you have enjoyed it, just give me yes sir.
कौन कौन ऐसा है जिसने सारफेसी एक्ट पहली बार समझा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव understood the Sarfesi Act for the very first time? Give me yes sir in the comment section. Done guys? Chalo. Now let's move on to the next point, and I guess it's the last news of the evening and the most important news of the evening, that is Financial Inclusion Index. Now, the moment this question is asked to me, Financial Inclusion Index, जैसे मैंने इस इंडेक्स के नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करने शुरू किए, कंटेंट बनाना शुरू किया, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई जहाँ से मैं अपने इस डिस्कशन को स्टार्ट करूँगा कि आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का मतलब अगर हम समझना चाहें तो वो बेसिकली क्या है? दैट इज बेसिकली कि व्हाट इज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, व्हाट इज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री. अब क्वेश्चन है लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेकिन हम लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन तभी समझ पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन इज how you define a term financial inclusion. According to you, what is financial inclusion? Can you give me the answer in the comment section, please? Can you give me the answer in the comment section, please? How you define a word financial inclusion? Try to write the answers in the comment section, guys, क्योंकि यही एक तरह से प्रैक्टिस है. आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर ऐसा ही आएगा. डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको टाइप ही करना है. यू विल नॉट गेट एनी पेन और पेपर. So that is the reason I would say do participate in these kind of questions which I generally ask in the class itself. They are really very important. ठीक है. If you ask me, sir, you tell me what is financial inclusion, then my answer would be financial inclusion basically means including more and more public with the financial sector of the country at affordable cost. Inclusion का मतलब होता है including everyone or including the entire public, irrespective of their religion, region, caste and whatnot. So when we talk about financial inclusion, what it means including more and more public with the financial sector of the country at affordable cost. अब बोल देना सबको कि बैंक अकाउंट ओपन कर लो, that won't be possible for everyone to open up a bank account. क्योंकि अब मान लो एक डेली वेज अर्नर है, वो कहेगा सर मेरे पूरे दिन की 500 रुपए की कमाई है, मेरा जो पर डे वेज है दैट इज 500 रुपीज, एंड यू आर सेइंग मी टू ओपन अप अ बैंक अकाउंट जिसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस रिक्वायर्ड है 500 रुपीज. सो इट इज यूजलेस फॉर मी. सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो you cannot achieve the target of financial inclusion, because if you want to include entire public irrespective of their economic scenario, then you have to provide affordable services. For example, we have zero balance saving accounts where if you are keeping zero balance, no penalty will be charged. So whenever we talk about financial inclusion, many students, they feel that financial inclusion ka matlab hai we are only concerned about bank accounts. No, we are not only concerned about bank accounts, we are concerned about financial services, which include not only banking services, it include your insurance services, for that matter pension services and whatnot. ठीक है. So financial inclusion means making financial services like banking, insurance, savings, credit, pensions available and accessible to everyone, especially the poor, the rural and underserved communities at affordable cost. At what? Sir, at affordable cost. ठीक है जी. अगला पॉइंट क्या है? अगर मैं एक आपसे एग्जांपल लूं, think of a small farmer in rural Odisha. Earlier he had to travel 20 kilometers to access a bank. Today, thanks to Jan Dhan account, mobile banking and local banking correspondence, he can save, borrow, receive government subsidies from his village itself. तो ये क्या है सर? This is a perfect example of financial inclusion. कैसे? Jan Dhan account gives you the affordability, mobile banking gives you the accessibility,
and this local business correspondent gives you the availability. So this is affordability, this is accessibility, and this is अवेलेबिलिटी, क्योंकि आपकी अब बैंकिंग सर्विसेज आपके गांव में अवेलेबल है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं बिना कहीं बाहर निकले, क्योंकि आपके पास मोबाइल बैंकिंग है और ये अफोर्डेबल है क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट्स आपको ऑफर किए गए हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज फाइनेंशियल इंक्लूजन. अब क्वेश्चन आता है कि सर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है. अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, देन आई वुड से इट इज बेसिकली अ रिपोर्ट कार्ड. It is basically a report card of government and RBI policies and initiatives for achieving financial inclusion. For achieving financial inclusion. तो अगर मैं कहूं कि for financial inclusion index में हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया का 30% है या 40% है या 50% है, तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में, विच इज नॉट करेक्ट, जो मैं बोल रहा हूं अभी ये करेक्ट नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि 50 आउट ऑफ 100 दे हैव द फाइनेंशियल सर्विस एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. बाकी 50 को एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी नहीं है. एंड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट accessibility, affordability and availability of financial services, RBI publishes financial inclusion index on annual basis, and this is presented for the financial year, and every year it is presented in the month of July, and it is presented since 2021. It is presented since 2021. So what is financial inclusion index? It has been conceptualized as a comprehensive index incorporating details of banking, investment, insurance, postal and pension sector. तो यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग सेक्टर नहीं है, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड एक्सेस है या नहीं, इंश्योरेंस सर्विसेज है या नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया या नहीं, लाइफ इंश्योरेंस करवाया है या नहीं, पोस्टल सर्विसेज या पोस्ट ऑफिस का एक्सेस है या नहीं, पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट रखा है या नहीं, पेंशन सेक्टर में इन्वॉल्व है या नहीं, हैव यू register yourself under Atal Pension Yojana so that you can receive the pension after the age of 60 years. So in consultation with government and respective sectoral regulators जैसे कि PFRDA, जैसे कि IRDAI, so इन सब से कंसल्ट करने के बाद, गवर्नमेंट के डेटा को रिव्यू करने के बाद RBI comes up with this particular data. So in order to measure financial inclusion, RBI has introduced Financial Inclusion Index since August 2021, covering the period up to March 2021, फिर आया March 2022, फिर 2023, ऐसे करते करते हर साल ये एनुअल बेसिस पे इंडेक्स प्रेजेंट किया जाता है. इट इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड और स्कोर कार्ड दैट शोज हाउ इंक्लूसिव our financial system is, how including our financial system is, how accessible, how available, how affordable our financial system is. Got it guys? Clear हो गया यहां तक? अब अगला पॉइंट है कि सर अगर हम बात करें ये जो इंडेक्स है, इट्स बेसिकली अ स्कोर 0 to 100. तो अगर ये स्कोर है 0 to 100 तो टेक्निकली इट्स अ परसेंटेज. जैसे मैंने अभी आपको बताया 50% का मतलब कि आज आपकी टोटल पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन ऐसी है विच हैज एक्सेसिबिलिटी, affordability and availability of financial services involving banking, investment, pension, insurance and whatnot. इसीलिए there is no need of base year. What is base year? So base year is something जिससे आप comparison करते हैं. You compare कि base year के मुकाबले how well you have performed. यहाँ पे base year की जरूरत ही नहीं है. क्यों base year की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर लास्ट ईयर 30% था, इस साल 50% हो गया ये इंडेक्स, लास्ट ईयर इसका स्कोर 30 था, इस बार 50 हो गया, तो इसका मतलब जो इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इट हैज इंप्रूव्ड बाय 20%. मींस फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज इंप्रूव्ड फॉर 20% ऑफ द पॉपुलेशन in terms of accessibility, affordability and availability. Now, if I talk about financial inclusion, it is built upon 3 pillars. ये 3 pillars कौन-कौन से? The first one is accessibility. How well you can access the services, which means we are basically talking about the demand side. We are basically talking about the demand side,
एक्सेस का मतलब है, एक सेकेंड, 1 second, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, so excess basically it talks about real financial inclusion means people actually use the financial services. So that is basically the accessibility. Accessibility के बाद अगला point है usage, that how well you are using these services, and the most important factor is quality, कि सर quality of financial inclusion क्या है, which ensure that the services are not just available, ऐसा नहीं कि services सिर्फ available है, but they are also fair, they are safe, and they are beneficial to the users, and users, they are financially literate so that they can make a good decision. तो weightage क्या है? Accessibility 35%, usage 45%, and what is the weightage of quality? So the weightage of quality is 20%. Weightage of quality is 20%. समझ आई ये बात? Any doubt till this particular point, guys? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये समझ आ गया तो एक बार यस सर टाइप कर दो सो दैट आई कैन मूव अहेड। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, या आप कहें कि 3 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल इंक्लूजन इज बेसिकली कैलकुलेटेड। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज बेसिकली calculated on the basis of 3 parameters. First one is usage, first one is access, that is infrastructure. It is the first step towards inclusion. If people can't reach banks or services, nothing else matter. तो accessibility हो गया। फिर usage है, पहला accessibility मतलब supply of banking services, supply of financial services। दूसरा है usage, that is demand. So just access होना जरूरी नहीं है, उस access के लिए demand होनी भी जरूरी है ताकि आप उसे यूटिलाइज कर पाए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज क्वालिटी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज क्वालिटी। सो एक्सेस इज मेजर द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। यूसेज इज बेसिकली द हाउ फ्रीक्वेंटली एंड डीपली पीपल आर availing or using the financial services, and quality basically means effectiveness, fairness, inclusiveness, and awareness of financial services. I repeat, effectiveness, fairness, inclusiveness, and awareness of financial services. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो एक्सेस का मतलब होगा अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, यूसेज का मतलब एक्चुअल डिमांड और यूसेज और यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज, और क्वालिटी का मतलब है अगेन आई वुड टेल यू awareness, fairness, inclusiveness, and effectiveness. Awareness, fairness, inclusiveness, and effectiveness. कुल मिलाकर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, और इन 3 पैरामीटर्स के हमारे पास 97 इंडिकेटर्स हैं। उन 97 में से 90 प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं, और 7 जो इंडिकेटर्स हैं दे आर बेसिकली टू चेक द इनइक्वालिटी। अब आप सोच रहे हैं इनइक्वालिटी का मतलब, आई विल रीच टू दिस पॉइंट इन सम टाइम, गिव मी फ्यू मिनट्स। सबसे पहला पॉइंट है एक्सेस, दैट इज सप्लाई साइड, रिफ्लेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आउटरीच। तो इसमें कितने डायमेंशंस हैं? 4 डायमेंशंस हैं। बैंकिंग का सप्लाई, डिजिटल सर्विसेज की सप्लाई, इंश्योरेंस सर्विसेज की सप्लाई, और पेंशन सर्विसेज की सप्लाई। और टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं? 26, जिसमें हम चेक करते हैं सेविंग अकाउंट्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट्स, एटीएम्स कितने हैं एक पर्टिकुलर एरिया में इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। सो अ फार्मर यूजिंग अ मोबाइल एटीएम वैन इन अ रिमोट विलेज इज काउंटेड अंडर एक्सेस। तो अगर आपके पास रिमोट विलेज में जहां एटीएम इंस्टॉल्ड नहीं है, इफ यू आर रनिंग अ वैन विच वी कॉल इट एज मोबाइल एटीएम, अगर वैसी अवेलेबिलिटी है, दैट इज अगेन प्रोवाइडिंग एक्सेसिबिलिटी टू द पब्लिक। दिस इज द फर्स्ट dimension, and this dimension include how many indicators? 26 indicators। तो ये 26 indicators मैंने यहां लिख दिए। दूसरा पॉइंट है यूसेज shows the demand side. It talks about savings and investment, कितना आप सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आप लोन ले रहे हैं, कितनी आप डिजिटल सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, कितनी आप इंश्योरेंस सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, कितनी आप पेंशन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली द डिमांड साइड। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 52 indicators which include number of loans, account activity, investment pattern, and whatnot. So a street vendor repaying a micro loan digitally and buying insurance will fall under the category of how well public is using the financial services. It has 52 indicators.
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से सुनना। क्या कहता है ये, प्लीज पे अटेंशन। क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, फेयरनेस, इफेक्टिवनेस, अवेयरनेस, फेयरनेस, अवेयरनेस, फेयरनेस, इफेक्टिवनेस एंड इंक्लूसिवनेस। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें समझना होगा, इट मेजर्स वेदर द पीपल, ये मेजर करता है वेदर, पहला पॉइंट, डू पीपल अंडरस्टैंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आर द पीपल प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड from any kind of issues related to the financial product. That means how strong the grievance redressal system of the country. And third is receive equitable services. What is the measure of, or what is the stand of inequality while delivering the financial services. Ab understand financial product means financial literacy. Are protected means consumer protection, that is resolution time of complaint. For example, integrated ombudsman scheme. For example, Swabhiman campaign. Swabhiman campaign is for financial literacy. Consumer protection के लिए integrated ombudsman scheme. And inequality means region wise, district wise, क्या gap है in terms of these services. तो इसमें 19 indicators है, जिसमें से 10 indicators तो वो है जो identify करेंगे, और 7 indicators है जो हमारे लिए inequality को calculate करेंगे. And we'll follow the same Gini's कोफिशिएंट इक्वालिटी की लाइन बनाई, देन एक्चुअल क्या लाइन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, दैट विल डिसाइड द इनइक्वालिटी इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस. अब वो इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस हो सकती है. एक्सेस का मतलब ये मान लो कि अगर एक इंडिविजुअल है जो लोन 10,000 से ज्यादा बोरो ही नहीं कर सकता, लेकिन बैंक 50,000 से कम का लोन ही नहीं देता, तो ये क्या हुआ, दिस इज इनइक्वालिटी. आप 50,000 का लोन दे रहे हैं लेकिन आप 10,000 का लोन नहीं दे रहे, तो इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी. अगर कहीं वो 10,000 का लोन दिया जाता तो जो इंडिविजुअल आज फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं है वो भी फाइनेंशियली इंक्लूडेड होता. सो दैट इज गिनी कोफिशिएंट फॉर बैंक ब्रांचेस, credit distribution and whatnot. So consumer right workshop held in tribal district is counted under quality aspect of your financial inclusion index. मजा आया, समझ आ गया. तो ये आपके 3 पैरामीटर्स हैं. क्योंकि अब पता प्रॉब्लम क्या है, मैं भी जानता हूं कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है बहुत ही ऊपर से क्वेश्चन पूछे. सो इफ एग्जामिनर इज आस्किंग अ क्वेश्चन इन दी phase 1, तो दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस slide only, or maybe from the current data which I will be discussing in some time. But अगर phase 2 में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया और अगर आरबीआई ने इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है. देखो क्वेश्चन आएगा जरूर, चाहे फेज 1 में आए चाहे फेज 2 में आए, भले दोनों में आए, क्वेश्चन आएगा जरूर. लेकिन अब देखना यह है किस डेप्थ तक जाकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, उस डेप्थ को हमें केटर करना है. और उसे केटर करने के लिए मैंने इन नोट्स को आपके लिए डिजाइन किया और आई एम प्रीटी श्योर मजा आ रहा होगा, क्लैरिटी मिल रही होगी. सो 26 + 52 + 10, अगर आप इसे फर्स्ट +12 आप इसे ऐड करेंगे, इट विल बी 90. सो 90 आर द प्राइमरी इंडिकेटर्स एंड 7 आर द इनइक्वालिटी इंडिकेटर्स. तो टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं, 97. पैरामीटर्स कितने हैं, 3. और डायमेंशंस कितनी है, 4 + 5 9, 9 और 3 12. सो 3 पैरामीटर्स, 12 डायमेंशंस, 97 इंडिकेटर्स. ये भी डेटा आप याद रखना. अगर कहीं मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गई जिसमें से यू हैव टू चूज वन ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वहां पर आरबीआई इस डेटा के साथ खेल सकता है. नाउ सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. पहला, बेस ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस. गिनीज बेस्ड इनइक्वालिटी ट्रैकिंग इज डन in terms of ATM availability, bank branch availability. Then sectoral consultation indicators and weights were decided in consultation with government and sector regulators. तो ये जो weights decide हुए ये RBI ने independently decide नहीं किए. In this, government and the other stakeholders were involved and collectively these weights were decided, and it emphasized on real sustained use and awareness, not just excess. अगर हम कंपेयर करें विद द अदर ग्लोबल इंडिसेस, आरबीआई मेथोडोलॉजी हैज ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी ऐसा ही है, आपके पास डिफरेंट डायमेंशंस है, उन डायमेंशंस में डिफरेंट
सॉरी, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, फिर पैरामीटर्स के डायमेंशंस हैं, फिर इंडिकेटर्स हैं, और उनके बेसिस पर एक कंबाइंड स्कोर क्रिएट किया गया. दिस स्कोर in this case is 0 to 100 because it is comparable to the percentage term. It is comparable to the percentage term. Sir, do we need to cover CA related to banking from somewhere else, or Soumya Verma? This is a very tough question to answer. I would say you can follow multiple sources, but that would be wastage of time because ज़्यादा पढ़ने से एग्जाम कभी क्लियर नहीं होता. कम पढ़ो, रेलिवेंट पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, उसे बार बार रिवाइज करो ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाए. तो आई वुड सजेस्ट यू कि दिस सोर्स इज मोर देन सफिशिएंट. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट ऑन मी, बिकॉज आई डोंट हैव डाउट ऑन माई सेल्फ, बट इफ यू हैव डाउट ऑन मी देन यू कैन फॉलो वन मोर सोर्स. बट आपको कुछ दिन के बाद समझ आएगा कि सारी सोर्सेस पे जो मेजर न्यूज है दे आर कॉमन, और जो एक्सप्लेनेशन यू आर गेटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू वोंट बी गेटिंग एनीवेयर एल्स. सो एक आधी सोर्स और घूमने के बाद यू आर गोइंग टू कम हेयर ओनली. सो इट्स बेटर, डोंट गो एनीवेयर, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट फॉलो दिस सोर्स, go through with the PDF thoroughly. That is more than sufficient. Now, जिस चीज के लिए you were waiting from last 20-25 minutes, that is the current data. So if I talk about the current data for March 2025, so India's financial inclusion index value was 64.2% in March 2024. It has increased from 64.2 to 67. तो यहाँ से क्लियर है कि आपके पास जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है दैट हैज इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ यूसेज. बट जो मेजर इंप्रूवमेंट हुई है दैट इज इन यूसेज एंड क्वालिटी, क्योंकि इन 2021 सप्लाई साइड वाज डिसेंट इनफ. अगर हम 2021 की बात करें, इन 2021 द सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वाज डिसेंट इनफ. इसका स्कोर ऑलरेडी 70 के आसपास था. बट जो मेजर इंप्रूवमेंट हुई है सिंस 2021 टिल डेट, या फ्रॉम 2024 से भी 2025 में जो मेजर इंप्रूवमेंट हुई है दैट इज इन केस ऑफ यूसेज, मोर फाइनेंशियल लिटरेसी, मोर पीपल आर यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स, माइक्रो इंश्योरेंसेस. Quality has improved, better financial literacy has provided, better consumer awareness, better support system which has increased the public confidence towards the financial sector. ठीक है जी. तो मेजर जो इंप्रूवमेंट है दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन दीज टू पैरामीटर्स. वैसे तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट है फ्रॉम 64.2 टू 64.2 टू 67, बट जो मेजर इंप्रूवमेंट है दैट इज इन यूसेज एंड क्वालिटी. और रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मेजरली इंप्रूव हुए, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी वाज ऑलरेडी गुड, या एक्सेसिबिलिटी का स्कोर वाज ऑलरेडी प्रीटी हाई इन 2021 इटसेल्फ. अब ऐसे चेंजेस क्यों हुए? व्हाई financial inclusion is improving over the period of time? Then answer is obvious. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, UPI and digital payment revolution in India, direct benefit transfer done by the government, linking to Aadhaar card, then microfinance and self-help groups for women, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. These are the some of the schemes or government initiative which has changed the financial landscape of the country, which has led to increase in financial inclusion in the country. Why this financial inclusion is important? Because it gives us the policy insights that ki jo policies government RBI bana rahe hai, are they in right direction? For citizen it is important because यहाँ से हमें ये पता चलता है कि how well public is utilizing the financial services. It reduces the income inequality and it builds resilience among the low income household because they have access to the formal financial sector. Real world अगर मैं benefit की बात करूं, imagine करो एक worker है who is working in Assam and he is sending money to his family back in Bihar with the help of UPI. So that is not just inclusion, it is providing the financial dignity as well as financial independence. पहले उन्हें किसी दुकान के पास जाना पड़ता था क्योंकि उनका बैंक अकाउंट नहीं था. वो अपने किसी जान पहचान वाले को असम में पैसा देते, फिर वो असम के जान पहचान वाला बिहार में किसी को कॉल करता, तब पैसा मिलता. अब फाइनेंशियल डिग्निटी है, इंडिपेंडेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फाइनेंशियल सर्विसेज विच हैव बीन प्रोवाइडेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो आपको याद क्या रखना है? 67 इज इंपॉर्टेंट, इंप्रूवमेंट, यूसेज, क्वालिटी, इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है. देन वेटेज ऑफ दीज 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है. पैरामीटर्स के बाद कितने इंडिकेटर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है.
पहली बार पब्लिश कब हुआ था 2021 में, वो इंपॉर्टेंट। और पब्लिश कौन करता है? आरबीआई। और ये रिपोर्ट जो है वो एनुअली पब्लिश की जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 2021 में ये स्कोर 53.9 था, इंप्रूव टू 64.2, और अब एक साल में इंप्रूव हुआ 64.2 टू 67 इज द करंट स्कोर। समझ आ गया? मजा आ गया? एक बार देख लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैंने आपको डेटा समझाया बस उतनी ही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें जब पढ़ोगे चीजें अच्छे से समझ आएंगी। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, और क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस, फेयरनेस, इफेक्टिवनेस एंड इंक्लूसिवनेस। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं मैंने बार बार रिपीट किए इन द क्लास, सो दैट दीज पॉइंट्स stay in your mind. They will act as a keyword while writing a descriptive answer related to financial inclusion. You never know, there could be a question on discuss the status of financial inclusion in India, and in that particular case you will be describing this financial inclusion index entirely in your session or in your descriptive answer. Got it, guys? If you have enjoyed the discussion, give me yes sir. If you haven't liked the session yet, do hit the like button before leaving the session, and do share this session with your friends so that more and more students, they can join us live in the upcoming sessions and they can cover their finance current affairs from the top-notch source which is available for free. Guys, quickly hit the like button if you haven't liked the session yet. Once you all hit the like button, I will be concluding the session, and do share your suggestions, your feedbacks in the comment section below. Do share your feedback, your suggestions in the comment section below. I will be implementing all your feedbacks, all your suggestions in my upcoming sessions to go. Thank you so much. Good luck. God bless you all. PDF will be available on the Telegram channel. Bye bye. Take care. Good luck. God bless you.